suggest that read these 5 pages only before the examination, because the amount of effort is not proportional to the marks, the returns you are getting. So that is my approach, and alhamdulillah, this has been good for scoring more than 90 marks, and more than 90 percentage in your out of 70 marks. Okay, so I will be keeping the same approach, but हाँ DNF block में I will tell you guys major chunk of questions कहाँ से आएंगे, बट आपको एनसीईआरटी ने एक बार रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने देखा हुआ नहीं होगा और कहीं इधर उधर से किसी छोटी सी लाइन से उन्होंने सवाल दे दिया, फैक्चुअल सवाल रहेगा, लॉजिकल तो नहीं, फैक्चुअल सवाल अगर दे दिया उन्होंने, तो आपको अगर याद है देन देयर विल बी हायर चांसेस ऑफ यू फॉर स्कोरिंग. ठीक है, हम एक किताब बता रहे हैं आपको. You can get the PDF very easily for this book. If you want to just wait a second, let me pause the recording, okay? Because I really don't know the YouTube rules. Okay. According to the charge on ligands, they are classified as. Thank you very much, Rajita. Really forgot about it. And guys, can you please have your cameras on? Anionic ligands, neutral ligands, and there are a few cationic ligands, but we don't have to learn them. Okay, we don't have to learn them. Cationic ligands. Okay, so anionic ligands, they have negative charge. So these are neutral, they have no charge, and these have positive charge. Okay. So I'm going to give you a list of anionic ligands. You will write that list with the name also. Okay. 3 points. Write the names. बस यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा. This COO negative, this whole thing is oxalate. Okay. Oh my God, my bad. Yeah. This whole thing, it is oxalate. Or oxalato is the IUPAC name. You write the IUPAC names. Huh? So while writing this, you're also writing the IUPAC names of different ligands. That F is fluorido and Cl is chlorido and bromido and all. And if you have done this IUPAC naming in your school, then थोड़ा बस ये ध्यान रखिएगा, स्कूल में शायद आपको फ्लोरो पढ़ाया गया हो. ठीक है, बट फ्लोरो मत लिख के आइएगा इन दी एग्जामिनेशन. प्लीज राइट फ्लोरिडो, बिकॉज इन एनसीईआरटी आल्सो दे हैव mentioned it that fluoro was old nomenclature rules. Fluoro was used in old nomenclature rules. The new nomenclature rules, according to the 2004 recommendation of IUPAC, it is fluorido. Similarly, for cyanido and cyano, cyano is again old and cyanido is the new one that has been recommended by IUPAC. Okay. So this is for those who have done this in the. अच्छा हाँ, this is the file. मिल तो क्या आपको? Yeah. अच्छा 261 MB that can. is the file. I will not download 261 MB, sorry, but I think you should send me a screenshot of the first page, na? Oh, pura hai. I don't have here like Wi-Fi. Wi-Fi is really bad here, so I use mobile data. You send me the screenshot of the first page, है ना? But that is the, I think that वही है. अरे यार इतनी तकलीफ हो रही थी, हम सोचे चलिए ठीक है आप तो कीजिए, जिसको अगर नहीं मिला ना वो हमको मैसेज करते हैं, हम डीएनएफ ब्लॉक का आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे. ठीक है, दैट विल बी अ स्मॉलर फाइल. I really did not know that 261 MB can be sent in WhatsApp. It can be sent in file form. आपने ग्रुप में ही भेज दिया, आपने ग्रुप में ही भेज दिया. ठीक है, it's fine. It's fine, okay. हाँ सही तो है. I think हाँ सही है. डॉक्टर एसपी जॉब. This Modern one, sir? ABC plus. Yeah.
Raise your hand once you're done writing all of this. Okay, guys, what happened? Nobody is having their cameras on. Deborah, Fia, Mir, Rachita, and Fadil, please turn your cameras on. Fadil got disconnected. Sir, is there any topic name for this? No, we are doing the ligand types and anicatinic. So these are just the names of ligands. है ना? See, negative ligand, that is the anionic ligand. Okay. Also, I will star mark a few. For example, I will star mark fluorido, chlorido, bromido, nitrito, N, nitrito O, sulfato also, I think you have to remember, and hydroxido, and oxalate you have to remember, cyanido. Okay, so then thiocyanito, then isothiocyanito, carbonato. Yeah, these are the ones which have been frequently used in the NCERT textbook, and they have been frequently used in the board examination. Okay, these ligands are used in the complexes, frequently used. बाकी भी use होते हैं, but not very frequently in your case. Please raise your hand once you're done, guys. रजिता कल तो अपसेट हो गया बिल्कुल. Yes, Rajita. No. Yes, sir. I'm sorry. Yesterday was a big upset, na? Yes, sir. Why, sir? याद नहीं दिलाना चाहिए था आपको. You had forgotten about it. Guys, what happened? You guys are taking so much time. Raise your hand if you're done. बाकी अभी और भी लिखने हैं. Positive and neutral. हाँ, बस जल्दी के चक्कर में गलत मत लिखिएगा गाइस, प्लीज.
अब जैसे ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, उसमें तो हम बोलेंगे आप अपने एनसीईआरटी को छूइए भी मत, ठीक है। आई मीन इफ यू आर गोइंग टू टच एनसीईआरटी यू विल बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज इतना शॉर्ट उन्होंने दिया हुआ है ना सब कुछ, इतना ज्यादा शॉर्ट दिया हुआ है सब कुछ कि इट विल बी लाइक रियली मेसिंग अप विथ योर माइंड। की आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जब स्टार्ट कीजिएगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो कैसे नाम, सारे सारे नाम वो लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, वीबीटी है, सीएफटी, सब कुछ वो यही क्लास में कीजिए, देयर इज नथिंग यू हैव टू लर्न। हाँ, बस आखिरी में एक छोटा सा टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो आपको पढ़ लेना पड़ेगा, वो भी एग्जाम से पहले, लेकिन ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये जो है ना एग्जाम से पहले पढ़ने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम से। अभी आप यू कैन अफोर्ड 1 or 2 मार्क्स हियर एंड देयर इन द यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट में, अगर कोई पूछ लिया है ना, व्हाट इज द एंटी कैंसर ड्रग, है ना, विच इज द व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैंसर ड्रग, तो उसमें एक होता है सिस्प्लाटिन। वो सारी चीजें आप लोग को 1-2 मार्क्स वाली बोर्ड से पहले पढ़ाएंगे हम लोग। ओके, फिया एंड मीर हुसैन वेटिंग फॉर यू गाइस। फिया एंड मीर, ओके गाइस डन, ठीक है। नाउ प्लीज राइट few positive and neutral ones. अब देखिए न्यूट्रल में ना देयर इज वन दैट यू डोंट हैव टू राइट, ठीक है, इसको मत लिखिएगा, NO2 पॉजिटिव को मत लिखिएगा। इफ यू आर गोइंग टू लीव द होल पॉजिटिव लिगेंड तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस देन आल्सो इट इज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। इसको अगर आप पूरा छोड़ना चाहते हैं पूरा छोड़ सकते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट इन द क्लास और इन द एग्जाम ऑल्सो, ये भी हम बता दे रहे हैं। कभी भी पॉजिटिव लिगेंड मत लेके आइएगा सर यहाँ, व्हेन यू वी आर आइडेंटिफाइंग ना कि ये कौन सा लिगेंड है, तो आपका आंसर पॉजिटिव लिगेंड में कभी नहीं रहेगा, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट द पॉजिटिव लिगेंड्स। आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब में से ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, या दैट्स इट। आफ्टर दिस देखिए हम कुछ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देर आर सम लिगेंड्स विच आर नॉट नॉट नेम्ड एज इट इज, है ना, जैसे कि पानी है, वाटर। सो वाटर को वाटर बोला जाता है बट इसका नाम आईयूपैक नेमिंग के हिसाब से इट इज एक्वा। देन यू हैव NH3, so this is ammonia according to the common name, but in terms of IUPAC naming it is amine, AMMINE, ठीक है। It's really important to write double M, it is not AMINE, amine नहीं है, AMMINE है। Then similarly we have CO, this is carbon monoxide in the common name, but in the IUPAC naming of complex compound it is carbonyl. Similarly we have nitrogen monoxide but it is nitrosyl. And last we have carbon monosulfide but it is thiocarbonyl, thiocarbonyl, ठीक है। प्लीज राइट दिस डाउन, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे जितने भी हमने लिखा है ना अलग से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। Adil, what is happening? You're getting disconnected so frequently. Deborah, Yes, sir. Fadil, Yes, yeah. sir. Today net is not very good. Not today. I think this is going on for a past few classes now. No, sir. On some days it happens. Otherwise, it doesn't happen, sir. Okay. Yes. It's So also these one all more. are neutral ligands, These all are neutral ligands. even the thing which we wrote also. Uh-huh. All of them. Water, NH3, CO, NO, CS, all of these are neutral ligands. Positive ligands. पॉजिटिव लिगेंड को छोड़ दो, आप मत लिखो, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड कभी यूज नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है। सफिया joined quite late today. अस्सलाम वालेकुम सफिया। Walaikum Assalam, sir. Safia, you're so late. Yes, sir, I had network issues.
Wait, what are you using? You're using mobile data or Wi-Fi? Right now I'm using data. Right, mobile data. Yes, sir. तो मोबाइल डेटा में तो प्रॉब्लम नहीं होती है. वाईफाई ऐसे आप वाईफाई यूज करते हैं और अभी मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं या फिर Sir, you're I'm always outside right now. I'm somebody else's house. अच्छा, you're outside today. Okay, okay. So you will not be writing notes, I guess, right? No, sir, I'll write it. You will write it. Okay. चलिए. Now you are so late that there are few things from here that we will be using. अब वो सारी चीजें आपको नहीं आएंगी. ठीक है, but there it is, you are half an hour late ना, और आधे घंटे से बच्चे सिर्फ लिख रहा है. And I have not explained anything. It is just to write, and we will be using these information in the later parts. ठीक है. Fair. All of you done, guys? Yes or no? Deborah, Fadil, Fia, Rachita. 1 second, sir. Aliza आई थी. Aliza फिर Fadil, let me know once you're done. Done, sir. Right, next. We have not done oxidation number ना, या फिर हम लोगों ने किया oxidation number? Just check. Coordination number किया हम लोगों ने, and no, we have not done oxidation number. ठीक है. Please write next oxidation number. See, these are just prerequisite knowledge for the nomenclature. ठीक है. So oxidation state या फिर oxidation number of central metal atom. ठीक है. So for example, let us suppose we have platinum, chlorine, then we have NO2, then we have 4 ammonia. ठीक है. And then outside we have SO4. So this is sulfate. ठीक है. Now we have to determine the oxidation number or oxidation state of platinum. So I hope you guys remember a bit from the redox reaction of the previous class that for platinum we will take it as X. Now tell me, what is the charge on chlorine, whether it is anionic या फिर neutral? Chlorine क्या anionic या फिर neutral? If anionic, then what is the charge on Cl? Look at your notes and tell. -1. -1. Very good. NO2, whether it is, आप लोगों को पॉजिटिव में देखना ही नहीं है. ठीक है ना. प्लीज रिमेंबर, अनायनिक और न्यूट्रल, इतना ही बताना है बस आपको. ठीक है. यू विल नॉट लुक एट द पॉजिटिव. पॉजिटिव नहीं है आपके सिलेबस में, पॉजिटिव नहीं है. टेल मी गाइस, NO2 अनायनिक और न्यूट्रल? Anionic or neutral, guys? NO2. Oh, what happened? Deborah, why are you not answering? Fia, why are you not answering? Fadil, keep your mic on, guys, all of you. Fia, Fadil, Deborah, Rajita. Safia Kitto could not answer, I understand. Now, what happened, Fia? You're not answering? Yes, sir, I'll answer. What is the charge on NO2? NO2. -1. -1. Very good. What about NH3? It is anionic or neutral? It's neutral. न्यूट्रल, तो 0. ठीक है. अब आपको चार्ज देखना नहीं है. SO4 का ऐसे मत देखिएगा, जाके देख सकते हैं वैसे, बट आई एम स्टिल सेइंग SO4 पे चार्ज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द चार्ज ऑन SO4? सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन 2 SO4? minus. 2 minus. दिस होल थिंग इज हैविंग चार्ज ऑफ -2. ठीक है. दिस होल थिंग यहां से SO4 पूरे पे. So now how will you calculate the oxidation state? I think you can remember a bit. X -1 plus 0 -2 is equal to 0. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. Yes, Yes, sir. sir. So X will be equal to how much? X -1 -1 -2 -2 -2 -2 -4 will be equal to 0, and X will be equal to +4.
Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेकंड देखिए. नाउ वी आर हैविंग काउंटर आयन, हमारे पास अनायनिक था. अब अगर काउंटर आयन कैटायनिक हो जाए, फॉर एग्जांपल यू हैव K3 Fe CN3 and let us suppose we have Cl3, है ना. And no, what will be the oxidation state here? तो पोटेशियम बताइए क्या, what will be the charge on potassium? K पे क्या चार्ज होता है? What is the oxidation state of potassium? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया था भाई हम लोगों ने ये सारी चीजें. पोटेशियम जनरली क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? Sir, +1. +1. वेरी गुड. अच्छा, Fe का निकालना ना, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसका तो X ले लेंगे. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Cn? अनायनिक या फिर न्यूट्रल? टेल मी गाइस, अनायनिक और न्यूट्रल Cn. आंसर चाहिए भाई. फादिल, फिया, स्पेशली यू गाइस. डेबोरा, डेबोरा, you have not given any answer till now. Sir, it's anionic. Anionic. What -1, is the sir. charge? -1. And -1, Cl we have yes. just seen, it is -1. ठीक है. Minus. now प्लीज ये देखिए, यहाँ पे अब आपको एक और चीज समझना है. 3 into 1 होगा because we have 3 potassium, plus we will write X plus 3 into -1 because we have 3 Cn, plus 3 into -1 for Cl, and this whole thing will be equal to 0. So here we have 3 plus X, and 3 into -1 is -3, plus 3 is equal to 0. Now, oh my god, this will be minus, my bad, -3, and one of this 3 and one of these 3 will get cancelled, and X will be equal to +3. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. बोलो भाई. ठीक है. Yes, sir. Now, you see, sometimes you will see something like this. NiCO4, NiCO whole 4. ठीक है. Now, there is no counter ion here. ठीक है, यहाँ पे कोई counter ion नहीं है. Nickel is going to be X. What is the oxidation state for CO? Whether it is anionic or neutral, tell me, guys. CO. Neutral, sir. Neutral, right? So it will be 0. So if you see the oxidation state, then this is going to be equal to X plus 0 is equal to 0. So X will be also equal to 0. So here the oxidation state is 0. ठीक है. Let us see another case in the fourth one. थोड़ा आसान ले लेते हैं. You have nickel NH3 whole 6, and then we have, let us suppose Cl2. ठीक है, तो बताइए जरा कैलकुलेट करके व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर निकल हियर. You have to calculate for nickel. So nickel is +2, right? Yeah, that is correct. देखिए, ये तो 0 हो जाएगा. दिस इज X, NH3 will be 0. 6 into 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. एंड Cl का कितना होता है? -1. -1 into 2, है ना. अब -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +2. ठीक है, तो थोड़ा +2, सा अब sir. आप लोग, हाँ, X will be equal to +2. आई थिंक यू गाइस कैन गो अ बिट फास्टर हियर, है ना. चलिए एक लास्ट केस हम देखते हैं. देते नहीं मतलब इसको हम करना ही पड़ेगा. सी, समटाइम्स यू विल हैव both the complex and counter ion में दो complex होंगे ना. anionic and cationic part are complexes only. So you have NH3 whole twice, and here you are having AgCN whole twice. ठीक है. Now we have to calculate for Ag ना. Ag तो हमारे पास दो है. So both of the Ag will be what? X and X. तो आपको क्या हो जाएगा? 2x. NH3 will be 0 and Cn will be -1. So 2x, 2 into 0 will be 0, 2 into -1 will be -2, which is equal to 0. So 2x is equal to +2, and x will be equal to +1. Okay, can you please copy this down? Let me know once you're done.
Raise your hand once you're done writing. Yeah, Rajita and Sophia, waiting for you guys. Okay, ठीक है. Now we can move on towards the naming. ठीक है. चलिए देखिए, जैसे इन्हीं में से स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस वन. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग ना, इसी को ले लेते हैं. वी विल ट्राई टू नेम दिस. ये रूल वूल होते हैं नेमिंग के, है ना. आपको अगर तरीका पता है नेमिंग का तो फिर बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं. वी विल प्रैक्टिस मोर. ठीक है, बहुत ही आसान है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए, यहाँ पे कैटायन और अनायन का आपको समझ में आना चाहिए, है ना. तो जो पहले आ जाए वही कैटायन है. दो चीज होती है, काउंटर एंड कॉम्प्लेक्स आयन. सो क्या आ रहा है पहले, काउंटर आयन या कॉम्प्लेक्स आयन, क्या आ रहा है पहले. व्हाट डू वी हैव Complex फर्स्ट, and कॉम्प्लेक्स आयन. तो ठीक है, वही कैटायन है एंड वी आर गोइंग टू नेम इट फर्स्ट. इन कॉम्प्लेक्स आयन यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट लिगेंड्स को पहले नाम देते हैं. किसको देते हैं पहले नाम, वी नेम द ligands को. लिगेंड्स फर्स्ट. ठीक है, तो बताइए लिगेंड्स में क्या क्या आ गया, बताइए. व्हाट आर द लिगेंड्स, टेल मी गाइस. Cl है, तो Cl का क्या नाम होता है, बोलो. Cl का क्या क्लोरिडो, नाम होता है, क्लोरिडो. वेरी गुड, क्लोरिडो. NO2 का, नाइट्रेटो, नाइट्रीटो. एन, N, हाँ. फिर NH3 का, NH3 का, बोलो भाई. न्यूट्रल है ना NH3. NH3 NH3 is amine, sir. अमाइन, AMMINE है ना, AMMINE. ठीक है, अब ध्यान दीजिए सिर्फ यहाँ पे, सिंस वी आर हैविंग 4 अमाइन ना, 4 है NH3, कितने Tetramine. हैं. हाँ, तो क्या कर लेंगे, इसको टेट्रा लिख लेंगे. मेक सेंस, इसनो प्लीज टेल मी. ठीक है. Yes. अब नाउ व्हाइल दिस इज लिगेंड्स है ना, दिस इज लिगेंड एंड व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम, प्लैटिनम. Platinum, PT. ठीक है, पीटी नहीं तो प्लैटिनम लिखेंगे ना, नाम लिखना है ना, प्लैटिनम. ठीक है, इट इज प्लैटिनम. एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव जस्ट कैलकुलेट फॉर प्लैटिनम, कितना था ऑक्सीडेशन स्टेट, 4. +4, राइट. सो इट विल बी लाइक दिस, 4. ठीक है, एंड व्हाट इज द काउंटर आयन, सल्फेट. क्लियर है. ठीक है, Yes, sir. अब सुनिए जरा. इन लिगेंड्स वी हैव मल्टीपल लिगेंड ना, एक से ज्यादा लिगेंड्स है आपके पास. सो यू विल राइट इट इन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच लिगेंड विल कम फर्स्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के Chlorido. हिसाब से. हाँ, यहाँ मिस्टेक हो जाता है. आपने सोचा क्लोरिडो बिकॉज यहाँ पे तो टेट्रा आ रहा है ना, राइट. बट ये ध्यान रखिए, टेट्रा जो है वो लिगेंड नहीं है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ लिगेंड, इट इज नॉट इन द नेम ऑफ लिगेंड, राइट. है ना, इट इज जस्ट डिनोटिंग कि 4 है वो. So please remember that whenever we are arranging the ligands, we are arranging them according to their names, not according to the number of times they are occurring. So according to the names, what will come first? Amine, यानी कि ये पूरा आएगा, tetra amine ही आएगा. But here tetra is showing that it is just what? It is coming 4 times. It will be tetra amine, chlorido, nitrito N, platinum, 4. Then you will write sulfate with a space. ठीक है, मेक सेंस गाइस, दिस वन प्लीज टेल मी. Yes, sir. Deborah, Rajita, and Safia.
आई थिंक ये पार्ट सफिया के लिए थोड़ा सा, सफिया दिस इज समथिंग अनकंफर्टेबल राइट नाउ, Little bit, sir. अ लिटिल बिट, ओके ठीक है, राइट दिस डाउन। तो देखिए जनरल नेमिंग का ये आपका कन्वेंशन रहेगा, जैसा हम लोगों ने अभी किया है ना, जनरली अगर नेम करेंगे हम चीजों को तो इस तरह से नेम होंगे। Sir, are naming direct questions? सॉरी व्हाट रचिता? Are naming direct questions? डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी आता है। सवाल ऐसे आता है कि मतलब तो डायरेक्ट तो आता है, वो तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो उसमें आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी आना चाहिए और फिर नेमिंग भी आनी चाहिए, है ना। सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमर आएगा तो आधा नंबर मिलेगा आपको, है ना। मार्किंग के हिसाब से कभी कभी मतलब जीरो भी मिल सकता है, बट जनरली हाफ मार्क्स आपको मिलना चाहिए इफ यू हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ दैट आइसोमर। एंड डायरेक्ट सवाल तो रहते ही हैं, 2 मार्क्स का रहता है आयुपैक नेमिंग, और ये है कि हर पेपर में रहता है। लुकिंग फॉर द एनसीईआरटी, कुछ सवाल आप लोग को देते हैं, ठीक है। पहले तो ना जनरल नेमिंग से आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए, जनरली जिस तरह से चीजों को नेम किया जाता है, और फिर जो उसके अंदर कुछ नई चीजें आएंगी दैट वी विल एक्सप्लेन, पहले आप इसका प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बाकी सारा केसेस है ना, ऑल द केस वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट बुक ओनली, लास्ट चैप्टर। All of you done writing now? Yes or no? Please tell me this name. Anyone still writing? देखिए सवाल मत लिखिएगा, आई एम टेकिंग अ फ्यू क्वेश्चंस, आपको उन्हीं को करना है अभी बस, ठीक है। यू विल डू दिस फर्स्ट वन, यू विल डू दिस सेकंड वन, एंड यू विल डू दिस सिक्स्थ वन, ठीक है। ये करिएगा अभी आप। अब इसके बाद देखिए फिर से हम टिक कर दे रहे हैं, यू विल डू दिस ए एंड देन यू विल डू दिस D1, ठीक है। ये दोनों कीजिए, 5 सवाल है, ठीक है। स्टार्ट डूइंग देम, बट ओनली डू द वन विच आई हैव टिक्ड मार्क, ओके। बाकी आप मत कीजिएगा, कुछ उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। Do this, I'm just coming in 2 minutes, okay?
So guys, can you please send me if you're done with the first one? ठीक है, पहला वाला करके भेजिए जरा. Just want to see. हाँ, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? So no one is done with the first one. Okay, Rishita is done. Oxidation state, yeah, that is correct. Yeah, very good. Everything is fine, Rajita. What about others? Please send me if you have done with the first one. I'm asking for Deborah, Fia, Fadil, and Safia. It will be chloride. It is count. It's not a ligand, na? Yeah, you got it. It will be chloride, sir. Same thing, Rajita. It will not be chloride. It will be chloride because it is not a ligand, na? Counter ion है वो, है ना? ठीक है. Yeah, correct. Deborah, correct. Very good. So guys, 5 more minutes and ठीक है, आप लोगों ने ये इन तीनों के लिए 5 more minutes. Safia and Fadil, I'm still waiting for your answers. 5 मिनट और है. Safia, what happened, Safia and Fadil? Can you please tell me what's the problem? Fadil is here, Safia is not. Fadil, what's the problem? You have not sent your answer till now. Yes, sir. I got disconnected, which I'm doing, sir.
Something sent. Yeah, you have sent for the another one. Yep, correct. Correct, Fia. Uh, Fia, have you done this previously in your school or something? Sir, actually, I watched the recorded lecture for my exam, like before. Your lecture अच्छा only अच्छा अच्छा, my lectures on. for the exam. So in the first one, Cl we won't write in ligands, right? No, it will not be in ligands. It is counter ion. Counter ion. Okay, okay. Deborah, for the second one, नहीं डाइक्लोराइड नहीं होगा, इट विल बी ओनली क्लोराइड ना. जैसे देखिए इसको डेबोरा प्लीज सी हियर. MgCl2 क्या होता है बताइए जरा. व्हाट इज MgCl2? क्या नाम होता है MgCl2? क्या बोलते हैं? अरे भाई रफादल का भी डिस्कनेक्ट हो गया. डेबोरा, व्हाट इज MgCl2? MgCl2 क्या बोलते हैं? Magnesium. मैग्नीशियम. Magnesium chloride. Chloride. क्लोराइड ना. डाइक्लोराइड तो नहीं बोलते हैं. Yes, sir. मेक सेंस है Okay, ना. sir. गॉट इट. यहाँ पे भी क्या क्लोराइड होगा. आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या डेबोरा? Yes, sir. I'm having fever. ज्यादा है. Yes, sir. अच्छा तो फिर आप रेस्ट कर देना, ऐसे क्लास में नहीं आने की जरूरत थी. अब भाई ख्याल रखें आप लोग अपना. अभी 2-3 महीने ही है ना एग्जाम को. प्रिवेंटिव मेजर है ना, ख्याल रखना बहुत आसान होता है. बट अब थोड़ा और डिटेल बताइए. आई यूज टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. हम 9th क्लास से बाहर रहते हैं ना. तो नाइन्थ स्टैंडर्ड आई यूज टू नॉट लिव विद माई पेरेंट्स. आई यूज टू लिव इन दिल्ली. सो एट दैट टाइम माई पेरेंट यूज टू से कि अपना ख्याल रखो. आई यूज टू बी रियली फ्रस्ट्रेटेड. अरे क्या ख्याल रखो, बॉडीगार्ड लेके घूमे क्या हम, क्या करें. ठीक है. सो बट आई विल टेल यू गाइस लाइक व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स यू शुड टेक इज दैट अगर ठंड आ चुकी है तो आप स्वेटर डाल लीजिए, है ना. और इफ यू आर
too prone to getting tonsils and something like that, then gargling करना होता है, ठीक है? You should gargle a lot, right? Then if you are having some congestions in your nose, और अगर वो उस तरह की infections होती है, then there is something, nebulizer एक चीज होती है, I don't know whether you guys know about it or not, है ना? So you should take steam, है ना? वो भाप वाली जो सांसें होती है ना, पानी गर्म करके उसमें थोड़ा नमक वमक डाल के, आप लोगों ने तो अभी पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसका, है ना? तो नमक वमक डाल के अच्छे से बॉईल हो सकता है वो, और भाप ज्यादा आएगा, ठीक है? तो ऐसे टॉवल ओढ़ के, ठीक है, उन सब तो ये सारी चीजें करें, ख्याल रखने का मतलब ये है, ठीक है? फिया डाइमीन क्लोरिडो मिथाइलामीन प्लैटिनम 4, प्लैटिनम 4 नहीं होगा, बट आई थिंक सी NH3 तो जीरो हो जाएगा, Cl के लिए -1, और NH2CH3 दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल, तो ये भी जीरो हो जाएगा, एंड Cl के लिए -1, तो -1 पीटी में होगा +2, राइट फिया? Yes, sir, I'll change. Can you repeat what did you say now? हाँ, अच्छा अच्छा, ये Sir, sorry, are you looking at Fia's or mine? आई थिंक फिया का देख रहे हैं, आपका भी वही है, 4 है? Yes, sir, even I got 4 here. नहीं, द- भाई आप लोग आंसर छाप रहे हो क्या कहीं से? नहीं नहीं, छाप तो नहीं रहे हैं आप लोगों ने, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम सब लिखा हुआ है, ठीक है? दिस विल बी जीरो, राइट फिया, बिकॉज अमीन इज न्यूट्रल, करेक्ट? Yes, sir. Cl के लिए -1, But oxidation state won't be same for everything. It will differ for every reaction. रिएक्शन कहाँ है? अरे NH3 के लिए हमने कब लिया -1? NH3 तो न्यूट्रल है ना? Yes, sir. No, I thought it's like cobalt means it will be 3 only, platinum means 4 only. नहीं 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 नहीं, और तो निकाल रहे हैं ना हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सीखा ना निकालना, लाइक दिस वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, गॉट Yes, इट? yes, yes, sir. अच्छा, ठीक है। अच्छा, 2 बार 3 3 है आप, अच्छा, असल में सेकंड वाला में 3 तो होगा, बिकॉज यस Cl के लिए -1 है, और यहाँ पे 2 × -1 है, ठीक है, तो वो तो +3 हो गई। बात डिलीट कर दिया रे, एग्जामिन 3 क्लोराइड, कोबाल्ट एग्जामिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हाँ ठीक, ठीक है। सो मोस्टली योर गाइस आर डूइंग फाइन हियर, है ना? देखिए, वो आपको ना कुछ दूसरे टाइप की चीजें हैं, उनके बारे में बताते हैं। सी हियर गाइस, मोस्टली यू आर डूइंग फाइन, ठीक है? देखिए ध्यान से देखिए, लिगेंड्स को ना, वी नो दैट वी यूज टेट्रा, वी यूज डाई, ध्यान से सुनिएगा ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज लिसन टू इट, है ना? बाकी जो आंसर्स वगैरह हम चेक कर लेंगे आप लोग के, ठीक है ना? जो मिस्टेक होगा, अभी आपने फॉर्मेट समझ में आ गया, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया कि कैसे लिखना है, बट जो एडिशनल नॉलेज है ना, आप उसको सुनिए जरा। सी व्हेन वी राइट द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, हम लोग क्या लिखते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना? बट if the name of the ligand already contains di, for example, अगर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये 3 बार आ गया, तो क्या लिखेंगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बहुत अजीब लगेगा, राइट? है ना? सो फॉर, अगर ये 3 बार आ गया तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रिस, और समझ में आ रही है? अगर ये 2 बार आ गया तो लिखेंगे हम बिस। बिस का मतलब दैट लिगेंड इज कमिंग 2 टाइम्स, और यहां पे ट्राई का मतलब है कि फिनाइल है 3 बार, ठीक है? तो उसके हिसाब से एक पॉइंट लिख लीजिए, इफ द नेम ऑफ ligand contains डाई और ट्राई और टेट्रा etc, then we use bis, tris, tetrakis,
pentakes as numeral prefixes. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस ध्यान से देखिए, सी पार्ट वी हैव कोबाल्ट Cl2 En whole twice, and then we have how many chlorines outside, one chlorine outside. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -1 और यहाँ पे -1, ठीक है, तो 2 into -1 विल बी -2 एंड -2, तो +3 आ जाएगा अगर आप देखिएगा यहाँ पे, इट विल बी x प्लस 2 into -1 En, इथाइलिन डायमीन इज 0, इट इज इन द न्यूट्रल कंपाउंड्स, En इज इथाइलिन डायमीन, ये हमने लास्ट क्लास में कराया था, इथाइलिन डायमीन En, याद आया, En इथाइलिन डायमीन, ठीक है ना, so it is one of the neutral complexes, उसके लिए तो 0 हो जाएगा, +0 and +-1, so it's the whole thing will be equal to 0, and we can write x minus 3 will be equal to 0, so x will be equal to +3. This is just sheer coincidence that cobalt हमेशा +3 आ रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, आप 3 बार किया उसमें तीनों बार में +3 आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे भी +3 है ये, ठीक है, खैर, see here guys, so what are the ligands that we are having? लिगेंड्स में हमारे पास है सबसे पहले 2 क्लोरीन, तो इसके लिए लिखेंगे डाइक्लोरिडो, ठीक है, एंड वी हैव 2 En, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बिस, इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट में इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है, एंड देन वी हैव द CMA, that is cobalt it is So 3, does this work as well? bis Yeah, so either any of them, right? है, सॉरी आई डू नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट क्या बोला आपने, Like for 2, can we use हाँ BIS and DIS? नहीं, बिस, ओनली बिस, BIS, Only this. हाँ, बिस होता है 2 के लिए, ट्रिस होता है 3 के लिए, टेट्रा इज फॉर 4, ये 5, ठीक है, then you have cobalt and cobalt 3, and then the counter ion, it is chloride, ठीक है, so the name is going to be, अब देखिए C पहले आएगा, उसके बाद E आएगा, D और B को मत देख के लिख लीजिएगा, बिस पहले, समझ में आ रही है, ठीक है, so chlorido will be coming first, will be dichlorido bis ethane 1,2 diamine, cobalt 3 chloride, ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, if complex ion is anionic, then if complex ion is anionic, then CMA name, just a second, करते हो, चलो ठीक है ना,
Here, if complex ion is anionic, then name of CMA, central metal atom, is ended with एट. ठीक है, मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल, इफ सेंट्रल मेटल एटम है ना आपका Cr, तो Cr को जनरली क्या लिखते हैं हम? क्रोमियम. विल नॉट राइट क्रोमियम, विल राइट क्रोमेट. कोबाल्ट जो कि बहुत बार आया है, सो फॉर कोबाल्ट विल नॉट राइट कोबाल्ट, वी विल राइट कोबाल्टेट. ठीक है, सिमिलरली और क्या आपके पास? इफ यू हैव Mn तो लिखेंगे मैग्नेट, मैंगनेट. ओके, व्हाट एल्स वी हैव सीन? क्रोमियम क्रोमेट हो गया, और क्या देखा हम लोगों ने? प्लैटिनम प्लैटिनेट, है ना? प्लैटिनम के लिए प्लैटिनेट. ठीक है, अब देखिए, अब कुछ ऐसे है ना, देर आर फ्यू कॉम्प्लेक्सेस, देर आर, सॉरी नॉट फ्यू कॉम्प्लेक्स, बट देर आर फ्यू एलिमेंट्स जिनके लिए वी यूज द लैटिन. जैसे Fe है, Fe के लिए आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फेरेट. Cu, कॉपर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्यूपरेट. इफ यू हैव Au तो वी विल राइट ऑरेट. इफ यू हैव Ag वी विल राइट आर्जेंटेट. ठीक है, what else we have? If you have Sn we'll write stanate. एक यहाँ पे एक सवाल आपके एल्यूमिनियम का है, उसका भी आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए. एल्यूमिनेट. ठीक है, व्हाट एल्स वी कैन हैव? Fe, कॉपर, शक्ति, वी, क्रमन, पी को नहीं, है ना? और कुछ नहीं. फेरेट, क्यूपरेट, AuAg. और किसी को कुछ याद आ रहा है जिसमें लैटिन नहीं यूज होता हो? हम्म, नहीं. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा एक चीज को. अब ध्यान सुनिएगा बिल्कुल. इफ, व्हाट इज एनायनिक? टेल मी गाइस, बोलो रे भाई. इफ Negative. ligands, if what is anionic? If, read this, if complex ion, Sorry. if complex ion, सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा. एनायनिक मतलब काउंटर आयन क्या हो? कैटायन. एंड कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायनिक. ठीक है, लेट अस सी हियर. फॉर एग्जांपल वी हैव K3FeCN6. K3FeCN6. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, दिस इज -1, सॉरी +1. एंड अब देखिए, कैटायन पहले आता है, एनाइन बाद में, है ना? तो कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायनिक, यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा. एंड देन यू हैव Fe, दैट इज X. Cn, दिस विल बी -1. सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 3 into 1 plus X plus 6 into -1, which will be equal to 0. ठीक है, तो 3 plus X minus 6 is equal to 0. ठीक है, अब X minus 3 is this equal to 0, and X will be equal to +3. Okay, again I am saying Fe is never going to be cation, anionic कभी नहीं होगा सेंट्रल मेटल एटम. द कॉम्प्लेक्स, दिस होल थिंग इज व्हाट? एनायनिक. अब उसके बाद लिगेंड्स तो आपके पास कुछ खास है नहीं. लिगेंड्स में क्या है आपके पास? वी हैव 6CN, so this will be hexa cyanido, hexa cyanido. ठीक है, हेक्सा सायानिडो. और तो कुछ बचा नहीं. और फिर हाँ, लिगेंड तो ये हो गया. एंड काउंटर आयन पहले आया था ना, तो काउंटर आयन हो जाएगा आपके पास पोटेशियम. फिर आएगा लिगेंड, एंड लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज क्या होगा बताइए? क्या लिखेंगे? Fe को, Fe को क्या लिखेंगे?
Ferrate. ferrate. And then you write 1, 2, 3. तो नाम कैसे लिखेंगे इसका? पोटेशियम. अच्छा, potassium, then there will be a space. Okay. Hexacyanido, no space, ferrate 1, 2, 3. ठीक है. Somebody has not written regarding this. Please write it down. Raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done. Just waiting for you here. Meanwhile, Rachita, can you please check if there is any assignment? Assessment, my bad. Assessment. And are you back, Mimi? Yes, sir. It's there. Please attempt it and we'll discuss a few. अब इसको अटेम्प्ट कीजिए आप खुद से, है ना? कुछ होमवर्क मिलेगा आपको, वो होमवर्क कीजिएगा एंड उसमें कुछ डाउट होगा, देन वी आर गोइंग टू लुक एट दी नेमिंग. थोड़ा सा जो भी डाउट हुआ आपको नेक्स्ट क्लास में, एंड वी विल स्टार्ट विद द बॉन्डिंग थ्योरीज इन द नेक्स्ट क्लास. जो वेडनेसडे को क्लास होगी, दैट देयर विल बी डूइंग द बॉन्डिंग थ्योरीज. ठीक है. ऑल्सो one more thing, if you want to, those who have not done haloalkene halorine with me, they can come to the Saturday Sunday class 6:30. पता नहीं हमने बोला या नहीं बोला आप लोग को. Please note this down. Saturday and Sunday 6:30 to 8 p.m. IST.